This year is the procession that has started from the old Pantalam Palace has reached at the part of the Mountain Lord of India, that it has reached the Sannidhanam, and the ornaments are being adorned on the Lord. Everyone is eagerly waiting. Every devotees are eagerly waiting for the moment when the temple doors are opened to have a glimpse of the same that is about to happen right here. Makara Jyothi, which culminates a glorious period of pilgrimage that bestows spiritual reinforcement to millions in solemnizing the occasion of a holy pit of Camper, is lighted from the height. A mountain range about 15 kilometers away facing the shrine. The millions of pilgrims, we are currently witnessing Makara Jyothi, and millions of pilgrims are getting immersed themselves in the spiritual experience for the second time.
seeing the sacred Jyoti, and that reminds him of the eternal light of spiritual presence within, symbolized by the divinity form of Lord Ayyappa, waiting for the third time to appear. Who illuminates the millions of galaxies, a source behind the formation, maintenance and dissolution of the universe and the evolution of life and its pilgrimage to spiritual freedom. That has happened. अंत में मकर ज्योति दिखाई दिया और भक्त ने पूरे आवेश के साथ, पूरी भक्ति के साथ मकर ज्योति का दर्शन किया। उसके साथ मकर ज्योति से उनको जो आशीर्वाद भगवान का मिला है उसको लेकर वो जाने वाले हैं। अब पूरे 1 साल तक उनके अंदर वो उम्मीद के साथ, वो उमंग के साथ अगले साल फिर मिलने की उम्मीद लेकर वो जा रहे हैं वापस। अभी मकर ज्योति के दर्शन करने के बाद लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बस यही घटना के लिए, यही इसी वक्त के लिए बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे थे भक्त लोग, और उनको दर्शन मिल गया मकर ज्योति का और भगवान का, स्वामी अय्यप्पा का। 18वीं सोने की सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़कर दर्शन करके, उनके पाद का स्पर्शन करके, आशीर्वाद लेकर, मकर ज्योति का दर्शन करके, मकर ज्योति का आशीर्वाद लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ पुजारी के पास से बड़ी कोशिश के साथ वो प्रसाद भी ले रहे हैं। प्रसाद को बड़ी हिफाजत से वो लेके जाएंगे। उसके बाद अरवना पायसम बोलकर वो जो प्रसाद है जो शुद्ध घी में बनाया जाता है, वो प्रसाद को भी लेके जाएंगे अपने साथ और पूरे 1 साल वो इंतज़ार करेंगे आने के लिए फिर से इस मकर ज्योति के अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के लिए। धन्यवाद।
മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ പിന്നെ ഭയത്തോടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് മാറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭയസം കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇടിയിട്ടല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ട യാത്രയാണല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാസ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് സാനിറ്റൈസർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പരമാവധി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് പരമാവധി അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കോവിഡ് കണക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കോവിഡ് കണക്ക് ഒന്നുമില്ല. കാര്യമായിട്ടൊരു വർഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. റീസെൻ്റായിട്ട് കണക്ക് പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയതിൽ കാര്യമായ വർഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ളതാണ്. കുറേ സുരക്ഷിതമായ ദർശനമായിരുന്നു സീസൺ. ഘോഷയാത്രയ്ക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കും. अब ये सबरीमला का जो उत्सव चल रहा है उसके पीछे बहुत से ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, जिसमें से मैं जैसे आपको बताया था कि शिव और विष्णु के जन्म लेने के कारण इन्हें हरिहरा पुत्र भी माना जाता है। भगवान शिव और विष्णु से जन्म लेने के कारण सबरीमला स्वामी को हरिहरा पुत्र माना जाता है। अभी आपको दिखाया गया टीवी के स्क्रीन पर यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कृष्णा कुमार वारियर वो बता रहे थे कि इस बार भी हर साल की तरह लोग बड़ी जोश के साथ आए हैं, बड़ी भक्ति के साथ आए हैं। कोविड होने के बावजूद भी पूरे कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए पब्लिक, ये जो भक्त लोग जो आए हैं पूरी तरह से वो कोऑपरेट करते हैं सहकारियों के साथ, उनके साथ एकदम अच्छी तरह से मिलन के साथ। और पुलिस भी इतनी मेहनत के साथ कोशिश कर रही है कि कहीं सबरीमला आके वापस जाने के बाद किसी को कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी बहुत कड़ी तरफ से निगहबानी करके मनाया जा रहा है। और ये ख़ास बात इसमें है कि सबरीमला में औरतों को 10 साल के ऊपर और 50 साल तक है सो औरतों को आना मना है। Here the ceremony of Pamba will occur, where is usually a devotional practice performed in respect to Lord Ayyappa as well as Ganesha, which happens at Pamba, the foot of the hills from where the artist's journey to Sannidhanam starts. We can see the lambs floating in the river and mostly in the banks of the river, in and around the steps as well. Lakhs of such lambs are lit, which is a feast to eyes, especially a believer's eyes.
all symbolifies the glory of goodness, oneness, Tatvamasi, devotion and goodness. We are getting the visuals of various types of lands lit in the banks of the river Pamba. Visuals of the adjoining hills of Sabarimala. From here, on top of the buildings, people are eagerly waiting to witness Makara Jyothi, the miraculous light which appears from Punamlame. धार्मिक किताबों के मुताबिक समुद्र मदन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहित रूप पर आकृष्ट होकर इसके प्रभाव से जो बच्चे का जन्म हुआ था उन्हें पंबा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। इस दौरान राजा राजशेखर ने इन्हें बड़े बहुत सालों तक पाल पोस के बड़ा किया। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लेने जंगल में गए अयप्पा ने वहां पर राक्षसी महिषी का वध भी किया। और उसके बाद आज भी यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर 15 राजा महल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में लेकर एक दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है।
witnessing here is a procession entering the Ambalappura temple, which is in association with the Ambalappura Pettathullal. With Pettathullal, that is it's a devotional dance performed by the pilgrims in Sabarimala. It's an important ritualistic custom of pilgrimage. The authors of the Puranas as well have noted linked mythological stories with the historical incidents to convey messages and principles. According to the Puranic view, the Pettathullal is a re-enunciation of joyful dance of the people on knowing that Ayyappa had slain the terrible Mahishi, a demoness having the form of a she-buffalo. It is believed that the place derived its name from Erumeli, that is, the place of Erumeli derived its name from the Malayalam word Erumakolli. Eruma means she-buffalo and Kolli, the place of killing. That is in order to commemorate such events that this Pettathullal is performed. Has two sections, Ambalappura and Alanga. We are witnessing the Pettathullal transformed from Ambalappura Sankam. According to the historical perspective, it is also given in many books, even the Puranas, that the Pettathullal was a part of spiritual discipline evolved by Ayyappa before embarking upon his war expedition against the despotic Udayanan to liberate Sabarimala temple from his hold. It was intended to raise a sense of all social and religious distinctions from the minds of the participants and to integrate them in the dynamic world. All of them wore blue or black clothes and smeared their faces with charcoal and other colors. They danced in abandon in a state of forgetfulness of their individual distinctions while making a conscious effort to fix their attention on the divinity of Allah, who they considered as a manifestation of supreme reality. While dancing and moving along with the procession, they uttered the sound Swami Tindagatom, Ayyappa Tindagatom, which is chanted even today by the dancing couple. इसी तरह इस मंदिर के पास आज आप जो देख रहे हैं मकर विलक्कु जो होने वाला है, इसका मतलब ऐसा होता है कि इस दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। घनी पहाड़ियों के कंदमाला छोटी असाधारण चमक वाली एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति घटना को ही मकर ज्योति कहा जाता है। मकर संक्रांति और उत्तर फल्गुनी नक्षत्र के संयोग के दिन पंचमी तिथि और वृश्चिक लगने के समय ही अब आप जो देख रहे हैं वो है अम्बलपुरा पेटा। अब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं वो है वावर मस्जिद। ये जो सबरीमला है, इसके इतिहास में एक बहुत बड़ी सामुदायिक मैत्री भी है। वर्षों पहले यानी कि 5,000 साल पहले भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता निभाने के लिए, मिलावट रखने के लिए यहाँ एक सामुदायिक मैत्री का उदाहरण भी आता है। जैसे कि जब स्वामी अय्यप्पन वहाँ वावर जो भी हो, वहाँ के एक जंगल के लुटेरे थे जो हर आदमी पर हमला करते थे। एक बार स्वामी का इनके साथ टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद इनके आपस में ऐसी दोस्ती होगी कि वावर स्वामी जो है उन्होंने इनके पूरे बुरे काम छोड़कर स्वामी के पास मिल गए और अय्यप्पा स्वामी वावर स्वामी दोनों मिलकर वहाँ राज करने लगे। उसके बाद भी जितने भी लोग हमला करने आए थे, जैसे कि उदयन आए थे एक बार हमला करने के लिए, तब भी इन दोनों ने मिलकर उनको हरा के भेज दिया था। और इस तरह अय्यप्पा स्वामी कहते थे कि वावर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, बस मेरे ही पास रह रहोगे। उनके दाएं तरफ एक मस्जिद बना गई जो वावर मस्जिद, नैना मस्जिद कहा जाता है उसको। वो वावर मस्जिद स्क्रीन में देखे थे आप, वो वावर मस्जिद में भी ये अय्यप्पा ये जो मंदिर का फेस्टिवल जो है, ये जो त्यौहार चल रहा है, इसके अंदर ये मस्जिद के लोग भी शामिल होते हैं। तो भारत का एक ऊंचा इतिहास, एक भारत की एक ऊंची संस्कृति और हिंदू मुसलमान की जो मैत्री, सामुदायिक मैत्री, अनेकता में एकतापन, भारत का
यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कहते हैं अंग्रेजी में, अनेकता में एकतापन, इसका एक उत्तम उदाहरण भी होता है इस सबरीमला के उत्सव में। और अब यह हाथी के ऊपर भगवान हाथी के ऊपर जो भगवान का स्तंभ यानी कि दर्शन करने के वाले जो हैं उसको लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर, आगे अंदर जा रहे हैं। रहा है और अब थोड़ी देर में मगर ज्योति होने वाली है। इसके इंतज़ार के साथ पूरे भक्त लोग आके खड़े हुए हैं। वो ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद जब अंधारा होगा तो अचानक से आसमान पर एक ज्योति दिखाई देगी जिसको मगर ज्योति कहा जाता है। इसके इंतज़ार में पूरे भक्त लोग आके खड़े हुए हैं। आज का इस साल का ये सबरीमला का जो उत्सव है, जो त्यौहार है, ख़त्म होने का आखिरी वक्त है और बड़ी ही बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं भक्त लोग दर्शन के लिए और मगर ज्योति का दर्शन के लिए। माना जाता है कि ज्योति का दर्शन करने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक इतना उजाला आ जाता कि अगले आने वाले साल में, आने वाली ज़िंदगी में इनको हर काम करने के लिए एक स्पेशल ताकत, जो हिम्मत, जो दिलेरी और जो हिम्मत चाहिए वो सब भगवान ने उनको अंदर दे देता है। इस मंदिर के पास घने जंगलों के अंदरों में बीच पहाड़ियों के ऊपर एक ज्योति अभी थोड़ी देर में दिखाई देने वाली है और इसके इंतज़ार में भक्त लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स वाले सब मिलकर बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ हिफाजत कर रहे हैं। और पब्लिक भी, यानी कि जो भी भक्त लोग आए हैं, बहुत ही होशियारी के साथ पूरे प्रोटोकॉल को मानते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को दिल में रखते हुए हिफाजती के साथ दर्शन करके जाने वाले हैं। नवंबर मंडल और 14 जनवरी के ये मगरविलक्कु सबरीमला का प्रमुख उत्सव, ये 3 महीने के करीबन का वक्त जो है मलयालम पंजाब के पहले 40 दिन के अंदर और विशुद्ध महायानी अप्रैल में इस मंदिर के पेड़ वाले जाते हैं।
the different areas to which the procession carrying the ornaments, the Tiruvabharanam, which is to be adorned on the Lord, visiting. What we are witnessing here is the different stages of procession undertaken from the old Pantalam Palace en route to Sannidhanam. These are the ornaments to be adorned on the modern Lord of India, Lord Ayyappa. Several devotees carry the ornaments on their shoulders and walk through the hills and the roads barefooted, carrying them till the Sannidhanam, where the priest adorns these ornaments onto the Lord, the idol of the Lord. En route to Sannidhanam from the old Pantalam Palace, this procession visits several temples, and one among such visit has been shown on your screen right now. Along the path of this procession, where this Tiruvabharanam is carried by barefooted devotees, lots of people assembled on both sides of the road to have a glimpse of the same. This is a much decorated event which goes on, which continues without losing its fervor, its ecstasy and devotion for centuries from now. Also, it's surprising to see that even the current situation of the rapid spreading COVID infection has not deterred the devotees from attending these events and making it colorful, devotionful and successful. These are the ornaments being carried. These are the scenes of the ornaments being carried. These are recorded events. These are the ornaments being carried, accompanied by the security forces of the Kerala police. Every arrangements have made on the route to see that everything falls in place at the right time. The visits of Tiruvabharanam to different temples is in fact a respite for those who are carrying them for kilometers and kilometers. आभरणों की घोष यात्रा जो रास्ते में जा रही है, तो दोनों तरफ लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए और आदर करने के लिए। कई लोग फूलों की माला पहनाकर भक्ति के साथ उन आभरणों की, उन गहनों की
इज्जत करते हैं और उसके बाद जब वो आभरण सन्निधान तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी भक्ति के साथ उसको लेकर रखने के बाद वहाँ एक पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद सावधान से इस पूरे सोने के गहनों को अंदर लेके जाकर भगवान पर, अभी आप जो देख रहे हैं वो है सन्निधान के उधर पूरी तरह से इंतज़ार हो रहा है मगर ज्योति के लिए। अभी तो सूरज ढलने वाली है, अंधारा हो रहा है, थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, एकदम अंधारा हो जाएगा। तो अचानक से एक चमत्कार की तरह मगर ज्योति आपको दिखाई देगा। इसके लिए पूरे इंतज़ार के साथ लोग खड़े हुए हैं। आपको सिक्योरिटी वालों का जो हवाई जहाज़ जो छोटी है वो भी आसमान में घूम रही है। हर तरह से पुलिस और पब्लिक दोनों मिलजुल कर अच्छी तरह से पूरा प्रोटोकॉल भी निभाते हुए हिफाजती के साथ ये साल का भी सबरीमला का ये जो त्यौहार है इसको बड़ी शान से और बड़ी भक्ति के साथ, इज्जत के साथ मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मगर ज्योति के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से 3-4 दिन के बाद, आज के बाद करीबन 4 दिन के बाद वहाँ के दरवाजे बंद हो जाएंगे और बस फिर अगले साल ही दरवाज़ा खोला जाएगा पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, दर्शन के लिए। തിരുവാഭരണ ദർശനവും മറ്റും നടക്കുന്ന ഇന്ന് ദൂരദർശൻ്റെ ലൈവ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ദർശനം What is special about Sabarimala is one thing, that is the forest route. Pilgrims going through the forest route are comparatively less during the first phase of the pilgrim season, that is during the Mandala Puja season. But during the Maha Makar Sankrama, the phase begins from the 1st January. A large number of pilgrims go through this route. Till about 2 decades ago, the pilgrims taking the forest route used to step directly into the forest immediately after Edumili. But now, they are supposed to walk at least 4 kilometers to the public roads before entering the forest. On the way, there is a broad stream called Peruntodu, once considered the boundary that separated the inhabited land from the forest. But now the villages extend from here up to a place called Irumponikara, that is 3 kilometers eastward. At Irumponikara, there are 3 temples dedicated to Lord Shiva, one to Lord Subramanya and goddess Balabhadra Devi. Immediately after this place, that is Irumponikara, the pilgrims enter dense tropical forest. Many prefer to walk barefoot through the holy mountain ridges considered to be the Pungavanam, the blooming grove of Lord Ayyappa. After a walk of about 3 kilometers, crossing some of the gentle forest streams, the pilgrims reaches a place of rest known as Arashamudi Kotta, where it is believed that Ayyappa and the soldiers took rest for some time. It is a place of worship of the guardian deities of the forest, and there is a small shrine for them. Then the pilgrims proceed ahead through a forest path that lies along the side of the river called Paratur, the crystal clear water of which frisk and roll out about amidst the rocks. It's an ideal place for a refreshing cool bath. The auspicious phenomenon of appearance of Krishna Paranda
occurs on some of the special occasions, like just before the procession carrying Tiruvabharanam, the special ornaments of the Lord, which starts from Pantalam Palace, and also when the procession reaches Sharankutiyal, a sacred spot near Sabarimala temple. These occurrences, as if programmed, take place every year, can be regarded as nature's clues reminding man of the all-pervading reality behind all phenomena. Such events serve to remind him of the greater dimensions in nature beyond what he knows in his ordinary conditioned state. However, more than such super-rational incidents, it is very intimacy with the inner divinity which the pilgrimage provides that draws millions to Sabarimala. During the pilgrimage season, Erumale witnesses memorable scenes of abounding devotion, color and festivity. Thousands of pilgrims on reaching here either proceed to Pampa by vehicles or take to the forest route by foot to reach there. In Erumale, near Valiyampalam, there is a camp of Akila Bharat Ayyappa Seva Sangham, a well-known voluntary organization which renders considerable service to pilgrims. A place associates Arutha was on the bank of a river known by the same name. About 2.5 kilometers from Kalaketi is another major resting place of pilgrims. From Kalaketi to Arutha, it is a mid-forest village scene, and between the two places there is a tarred road instead of the usual rut forest path. The river Arutha is a tributary of river Pampa. Many of the pilgrims camp at this place during night, and there are a number of temporary sheds that provide accommodation. In Arutha, there is a temple complex of various deities. A special ritualistic ceremony performed here is Ari Puja, which is a prayerful walking around a huge pile of fire chanting aloud Swami Sharnamayappa. During the Makara Sankrama season, especially after the 1st January, Arutha and surrounding areas become a scene of constant movement of millions of pilgrims. The holy bath in the river Arutha is a part of the pilgrimage. While making a dip, the pilgrim, as a ritualistic custom, takes a pebble from the river which he later drops on reaching the place called Kalidikul, which literally means a hill where the stone is dropped. Everyone are eagerly waiting for the Makara Vilakku to appear in the skies. We're witnessing the scene inside the Sannidhanam. The cameramen of Darshan and the associated officers are working tirelessly to bring you these wonderful, these blissful visual records from Sannidhanam and Pampa. ये हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति का एक ऊंचा प्रतीक है। इधर सामुदायिक मैत्री और एकतापन का 5000 साल पुराना एक उदाहरण आज भी भारत के संस्कृति के ऊपर इज्जत के साथ बहुत बड़ी शान के साथ नाम लिया जाता है। अय्यप्पा स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, फिर भी सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, मुसलमान हो या ईसाई हो, जो भी हो, सब बड़ी भक्ति के साथ साल में एक बार इधर आकर दर्शन लेके जाते हैं। ये सबरीमला शैव और वैष्णव के बीच एक अद्भुत कड़ी भी है। पश्चिम घाटी में पहाड़ियों के श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित ये अंबल, ये जो अय्यप्पा स्वामी की जो मंदिर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दुर्घटनाओं से पार करना पड़ता है। जंगल के घड़े घड़े बहुत गहरे रास्ते और
कई तरह के जानवरों के बीच में से आजकल तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई, जाना आना तो आसान हो गया, फिर भी जो लोग पूरी कोशिश करके पूरी हिम्मत के साथ करते हैं तो वो एक 40 दिन का व्रत अनुष्ठ करके नंगे पैदल जाते हैं, अपने घर से पैदल निकलकर वहाँ तक अय्यप्पा स्वामी के पास 18वीं सीढ़ी के ऊपर तक जाकर स्वामी का दर्शन करके उनका We are witnessing the preparations for the much decorated Pamba Sadhya, which happens every year in the banks of River Pampa. Near the temple of Lord Ganesh. It's an offering to the Lord. Along with the Lord, there is a feast where millions of devotees attend. We are witnessing the scenes from there. This food, they have this food with much devotion and pleasure. The devotees see this as an instance of blessing. ये पंबा नदी के तट पर आखिर में एक समूह भोजन मनाया जाता है, जिसको पंबा सद्या कहा जाता है। वो समूह भोजन के बाद सब लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं मगर संक्रांति के लिए। वो जो मगर ज्योति जो आसमान में दिखाई देगी उसके लिए बड़ी इंतज़ार के साथ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं मंदिर के पास बड़ी बेचैनी के साथ भक्त लोग पूरी प्रतीक्षा लेके खड़े हुए हैं। जब भक्त लोग वापस जाएंगे तो वो यहाँ से प्रसाद भी लेके जाएंगे। उनके लिए प्रसाद जो है उसको अरवाना कहा जाता है। गाय के दूध से निकाला हुआ शुद्ध गाय का घी से बनाया हुआ इस अरवना यानी कि खीर जो है प्रसाद के रूप में आगे पूजा पाठ के बाद जो भक्तों के लिए आजकल गवर्नमेंट उसको पैक करके बड़ी हिफाजत के साथ देवस्थान वाले दे रहे हैं, उसको भी लेके जाएंगे प्रसाद के साथ अपने अपने घर को। उसके लिए बड़ी इंतज़ार से भक्त लोग खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में मगर ज्योति दिखाई देगी। आप जो देखते हैं पर्दे पर और सोने से गहने बनाए हुए पूरे भगवान के मूर्तियां हैं और
from the British records, we can have some interesting facts. That is, in 1812, the British lieutenants Ward and Connor says on January 12, about 10 to 15,000 people from the most remote parts of India visited Sabarimala. I am referring to the memoir of the Survey of Travancore and Cochin States, page number 136. It is very pertinent to note that when India's population was in millions, in 1812, when steam engine, car, train was not even thought of, people came by walking from the remote parts of India. The usage is interesting, as it is not Travancore or Kerala or the Madras Presidency or South India, but the usage in the memoir was India. Many of the renowned film actors and celebrities are here. The procession from the Pandalam Palace is about to reach Sannidhanam, which has almost reached Sannidhanam, and it is carrying all those blessed ornaments of Lord Ayyappa, and it is about to step into the 18 holy footsteps. Now that this is a most important and auspicious moment for all the devotees waiting for this to happen, that the procession, the Tiruvabharanam procession, the team is slowly arriving at the scene at Sannidhanam. The preparations are being largely made. Everyone is eagerly waiting for the Makara Jyothi to happen, which is also called as the Makara Vilakku. Makara Jyothi is a star that rises in the horizon, which is a Rudra Nakshatram, or the Westerners call it as Cyrus. In Latin, Cyrus means Jyoti, that is a flickering light. Makara Vilakku, on the other hand, is a symbolic Deeparatana in a place called Ponnambalameda, where Malayarayas, the tribal Vanavasis, Adivasis, used to do Deeparatana. Now the tradition is continued. There is a striking difference between Makara Jyothi and Makara. The Makara Jyothi is a star that rises on the horizon. The Westerners call it Sirius. In Latin, Sirius means Jyoti, or a flickering light. Makara Vilakku, on the other hand, is a symbolic Deeparatana in a place called Ponnambalameda, where Malayaraya tribal Vanavasis, Adivasis used to do Deeparatana, and now the tradition is undertaken and continued. Ayyappa is about to reach the 18 feet, about to scale the 18 feet, and it is in the vicinity of the holy steps. Accompanying the same, they are also garlanded. They also take part in this devotional scene. They are also part and parcel of all these happenings.
see men carrying the ornaments to be adorned on the Lord. They're being held by people surrounding them. Remember, they've been carrying this for hundreds of kilometers, right from the old Pantalam Palace, barefooted on the top of their head. The final folding of ribbons is happening here, which needs no description as well. A moment of silence for those blissful devotees to enjoy and devote themselves to this colorful, wonderful and devotionful happiness. People paving the way and the procession is moving on. The people carrying the ornaments have been guided to the temple.